Soon after being given a third term as Prime Minister of the country and winning from Kashi for a third consecutive term as well, the Prime Minister today returned to his Lok Sabha constituency, a place that he has called nothing short of his mother. Remember, before the elections, Prime Minister Modi spoke of how he now has an emotional bond with Varanasi and that he is more a Banarasiya than somebody from Gujarat. The city has changed him completely. The very first engagement that he had in the constituency was with the farmers. He attended a Kisan Sammelan. He was felicitated with the statue of a farmer by Chief Minister Yogi Adityanath, and he also released the 17th installment of the PM Kisan Samman Nidhi amounting to over 20,000 crores. Now remember, so far the opposition has been saying that Modi is a diminished man. In fact, the Congress so far has been calling him Ek Tihai Pradhan Mantri, but far from that, the PM today in Varanasi said that he and Varanasi have made history by getting a third consecutive term, something that has happened for the first time since the 1960s. किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। आपका ये विश्वास मुझे लगातार आपकी सेवा के लिए देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा देता है। आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। The Prime Minister's next stop will be the Kashi Vishwanath Temple, which he last visited just before he filed his nomination papers. Varanasi is decked up to welcome its 3-time MP with dhol, conches, rose petals being showered. Let's remind you how he has a special bond with Varanasi. In fact, he has spoken of it in our interview before the elections, where he said that Kashi is like my mother. न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा मैंने 2014 में कहा था कि उस समय मैंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है।
तो अभी दस साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया। Now remember, this is an important visit, not just because it comes after the poll win of the BJP nationally, them forming a government for the third time, but because of the Saffron Party's poll performance. In Uttar Pradesh, the BJP went down to 33 seats this time. The Prime Minister's own margin of win also went down, and it has generated a lot of commentary from opposition, and which is why the Congress today said that today is not a time for celebration, it's a time for introspection. सुनने में तो ये आ रहा है कि 500 करोड़ रुपए बांटे हैं नरेंद्र मोदी जी ने। ये मेरा बड़ा आरोप है। ये बनारस में गया भी था चुनाव के बाद। लोगों का कहना है, लोकल लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 500 करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च किए। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद देने नहीं जा रहे बनारस। नरेंद्र मोदी जी अपने 500 करोड़ रुपए जिन जिन को बांटे होंगे उनसे हिसाब लेने जा रहे होंगे कि किस किस को पैसे दिए थे जो वोट मुझे 1.5 लाख से जीत मिल पाई। जीत का तो मार्जिन 10 लाख के करीब का बताया था कि 10 लाख के करीब जीत का मार्जिन होगा। तो निश्चित तौर पे वो 10 लाख तो नहीं हुआ, 5 लाख भी नहीं हुआ, पुराना रिकॉर्ड भी नहीं बरकरार रह सका। तो नरेंद्र मोदी जी अपने 500 करोड़ खर्च किए गए पैसे में से हिसाब लेने बनारस में जा रहे हैं। The Prime Minister has not gone to Kashi to authorize any Kisan Nidhi. The Prime Minister has gone to Kashi to assess, to reevaluate with his team. Why did he almost lose Kashi? His winning margin came down from 5 lakh to 1.5 lakh. He barely managed through. The reality is that the Prime Minister has no moral responsibility to be in this position, because morally this has been a big defeat for him. I mean, he has had the lowest margin any Prime Minister in this country has had in a general election. He actually has no business being the Prime Minister after losing 63 seats right under his nose. He has gone to Kashi for reassessment, for reevaluation of what went wrong, how he barely managed to scrape through. All right, Charu Pragya, spokesperson of the BJP, joins us along with political analyst Varun Singh, Sameer Singh, national spokesperson of Samajwadi Party. Charu Pragya, it's not a time for celebration, says the Congress. It's a time for introspection. Is introspection happening in Varanasi? Well, it's a bit rich for Congress to be giving us advice at any point of time, Padmaja. But this is a political party which has taken 10 days for that fact to sink in that they have lost the election. They completely stopped talking about EVMs, dug it up again once they realized that 99 in fact is not 99 out of 100.